Hello, genius brains. A very warm welcome to your EVIS class with your learning buddy Aprajita. So, children, today I am here with your Environmental Studies Class 4 by Acknowledge Series Amit Publishing House. And children, ready for a new chapter? So, yes, here we start with chapter number 16, and the chapter is Mapping our neighborhood. Neighborhood means हमारे आसपास जो हैं, जो चीज़ें हैं या जो लोग रहते हैं, that's our neighborhood. We have many things in our neighborhood. हमारे आसपास बहुत सारी चीज़ें होती हैं. So let's see in this chapter what all is there. Man is a social being. We do not live alone in a locality. हम social being कैसे हैं? क्योंकि हम अकेले नहीं रहते हैं. We live together. We don't live alone. We live together in a locality. There are many houses near us. हमारे घर के आसपास और भी दूसरे houses हैं या घर हैं. People living in these houses are called our neighbors. Our neighbors. हमारे neighbors कौन होते हैं? जो हमारे घर के पास रहते हैं, आसपास में जो रहते हैं, वो हमारे neighbors होते हैं. The area around our house is our neighborhood. और जो एरिया होता है हमारे घर के आसपास का, उसे कहते हैं neighborhood. There are many buildings in our neighborhood which provide services to us. Now, हमारे neighborhood में, हमारे आसपास के एरिया में बहुत सारी ऐसी जगह हैं जो हमें services भी provide करती हैं, like schools, hospitals, post offices, police station, petrol pumps, markets and shopping malls are some of them. ये कुछ जगह हैं, ऐसी होती हैं हमारे neighborhood में जो हमें services provide करती हैं. Now, finding our ways. There are many different ways of finding our way from place to place. एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए जो रास्ता हमें find out करना पड़ता है, उसके बहुत सारे तरीके होते हैं. We can follow signposts on the streets to get to wherever we want to go. अब हमें कहीं जाना है, अपने नेबरहुड में ही कहीं अगर जाना है एक जगह से दूसरी जगह पे, तो हम एक तो तरीका है कि साइन पोस्ट लगे हुए होते हैं, उन्हें देख देख के हम उस जगह पे पहुंच जाते हैं. If there are no signposts, we can look at landmarks such as a hill or a particular building to help us find a place. अब लैंडमार्क क्या होती है कि जहां हमें जाना है उस जगह के आसपास कौन सी ऐसी जगह है, या तो कोई हिल है, ऊंची सी हिल है, या कोई ऐसी शॉप है जिसका नाम हमें पता हो, दैट इज नोन एज अ लैंडमार्क. ओके फाइन. और अ स्टोन इज देयर और अ हिल इज देयर, दैट इज अ लैंडमार्क ऑफ दैट प्लेस. हाउ डू ड्राइवर्स नो व्हेन टू टर्न लेफ्ट और राइट? अब जब ड्राइवर ड्राइव कर रहा होता है कोई भी व्हीकल, उसको कैसे पता चलता है कि लेफ्ट जाना है या राइट जाना है? All travelers look for landmarks such as a particular tree, a petrol pump or a market to understand where they are. जितने भी ट्रैवलर्स होते हैं, बाहर से जो लोग आते हैं, वो एक पर्टिकुलर लैंडमार्क को देखते हैं जिससे कि उन्हें पता चलता है कि वो किस जगह पे है, कहाँ पे है. Drivers, hikers and sailors also use compasses and road maps to guide themselves towards their destination. अब ये जो हाइकर्स होते हैं या ड्राइवर्स होते हैं, ये और द सेलर्स जो सी में सेल करते हैं, वो कैसे पता चलता है उनको, कैसे उस जगह को आइडेंटिफाई करते हैं जहाँ उनको जाना होता है? दे जस्ट फॉलो, दे हैव द कंपास, या तो कंपास होता है उनके पास और या रोड मैप होता है. नाउ मैप, व्हाट इज अ मैप? A map is a drawing of a neighborhood, a city or a country. A map can also be of the world. अब map, this is a map. Fine, this is a road map of India. ये इंडिया का road map है, country का road map है. Now, and map is a drawing of a neighborhood. एक neighborhood का drawing होता है, या एक city का drawing, या एक country का drawing होता है. And it can be of world also. We can take the help of a road map to locate a place in a city. एक city में कौन सी जगह पे हमें जाना है, उसका
उसको हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, रोड मैप के थ्रू भी हम उसको लोकेट कर सकते हैं। रोड मैप्स शो ऑल द रोड्स ऑफ अ सिटी। देखिए हर एक सिटी का रोड, इस रोड मैप में हर एक सिटी का रोड दिया हुआ है। फाइन, all the roads of a city are mentioned here. We can get them at bookshops, railway stations and bus stands. ये जो road maps है ये हमें बुक शॉप पे मिल सकती है, रेलवे स्टेशन पे मिलती है या बस स्टैंड पे भी मिल सकती है। Now in a colony we can also see a colony map displayed at the entrance. Now children, if you are staying in any colony, ज़्यादातर लोग आजकल कॉलोनीज में रहते हैं और कॉलोनी के एंट्रेंस पे ही एक मैप बना हुआ था, दैट इज कॉल्ड कॉलोनी मैप। वो कॉलोनी का मैप होता है। विद द हेल्प ऑफ दिस कॉलोनी मैप वी कैन इजीली लोकेट एनी हाउस ऑफ दैट कॉलोनी। या तो नंबरिंग होती है उस पे कि ए से जितने भी हाउसेस हैं, हाउस नंबर्स विद ए बी सी अगर है तो इट डिपेंड्स ऑन द वे दे आर मार्क्ड, तो वो एक मैप कॉलोनी मैप एंट्रेंस पे ही बना हुआ होता है। उसकी हेल्प से हम उस हाउस तक पहुंच सकते हैं जहां हमें जाना है। टाइप्स ऑफ मैप्स। नाउ देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैप्स। Maps are drawn differently to highlight particular features of a place. Relief maps show the shape of the land. जो relief map होते हैं वो land का shape बताते हैं, किस shape का है वो land. Political maps show countries, their capital cities and their borders. जो political maps होते हैं वो countries को show करते हैं और उनके capital cities को या उनके जो borders हैं उनको show करते हैं. Thematic maps tell us interesting facts about different regions. They give information about the weather and climate of a place or about the plants and wildlife that grow and live in a place. Now, जो thematic maps होते हैं, देखिए इसमें कितनी सारी चीजें होती हैं। ये अलग अलग regions के बारे में interesting facts बताते हैं कि वहाँ का वेदर, क्लाइमेटिक कंडीशन कैसा है, या प्लांट्स और वाइल्ड लाइफ किस तरह के हैं वहाँ पे, किस तरह ग्रो करते हैं, किस तरह के प्लांट्स ग्रो करते हैं वहाँ, किस तरह की वाइल्ड लाइफ है वहाँ पे, दैट इज शोन इन अ थीमेटिक मैप. पिक्चर मैप्स. पिक्चर मैप्स टेल अस अ स्टोरी विदाउट अ की because pictures are used in them instead of symbols. अब पिक्चर मैप्स में वो एक स्टोरी हमें बताता है, कोई की नहीं दी होती है, बिकॉज उसमें जो पिक्चर्स यूज किए जाते हैं वो पिक्चर्स ही हमें सब कुछ बता देते हैं इंस्टेड ऑफ एनी सिंबल. उसमें किसी सिंबल की जरूरत नहीं होती. वेदर मैप्स. वेदर मैप्स यूज सिंबल्स दैट कैन बी अंडरस्टूड एनीवेयर इन द वर्ल्ड बिकॉज दे आर लाइक पिक्चर्स. ये जो वेदर मैप्स होते हैं इसमें सिंबल्स का यूज होता है और कोई भी इसे समझ सकता है क्योंकि ये भी एक पिक्टोरियल होता है. These are also like the pictures. Language of a map. अब मैप की लैंग्वेज क्या होती है, कैसे समझे, उस मैप को कैसे समझा जाता है, that we'll read here. Different types of information are shown on a map. एक मैप पे अलग अलग तरह के informations होते हैं. It needs to have a language. The language of a map is same all over the world. पूरे वर्ल्ड में जो मैप्स देखे जाते हैं उन मैप्स की जो लैंग्वेज होती है वो बिल्कुल सेम होती है, एक जैसी होती है. इट इज मेड अप ऑफ डायरेक्शंस. अब देखिए मैप में क्या क्या चीजें होती है. डायरेक्शंस, कलर्स, साइंस एंड सिंबल्स एंड स्केल. ये चार चीजें हर ऑल ओवर द वर्ल्ड जितने भी मैप्स हैं सभी मैप्स में ये चार चीजें जरूर होती हैं. व्हाट आर दोज? डायरेक्शंस, कलर्स, साइन एंड सिंबल and the scale. Now directions in map. क्या होते हैं ये directions? कैसे दिखाए जाते हैं? There are 4 main directions: north, south, east and west. A sub-direction lies between 2 main directions. 2 main directions के बीच का जो direction होता है वो sub-direction होता है. There are 4 sub-directions. अब sub-directions भी 4 हैं. कौन कौन से? These 4 sub-directions are northeast, okay, northeast, northwest, southeast and southwest. Fine. Thus the northeast direction
lies between north and east. Now see children, look here. बहुत ध्यान से इस डायग्राम को देखेंगे. North, south, east and west. These are the four main directions. अभी मैं जो four main directions है उसको circle करूंगी. Fine, I'll circle the four main directions. North, south, east and west. Fine. Now the sub directions. जो north, देखिए अभी हमने पढ़ा north east. तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन लाइज बिटवीन नॉर्थ एंड ईस्ट. नॉर्थ का है, नॉर्थ ये रहा, ईस्ट ये रहा. इन दोनों के बीच का जो डायरेक्शन है वो सब डायरेक्शन है. आई विल अंडरलाइन दिस, आई विल नॉट सर्कल दिस चिल्ड्रन. सर्कल तो हमने मेन डायरेक्शन को किया है. आई विल अंडरलाइन दिस सब डायरेक्शन. ये हो गया हमारा सब डायरेक्शन. फाइन. अब ईस्ट और साउथ के बीच का जो डायरेक्शन है दैट इज साउथ ईस्ट. फाइन. चलिए हम विल गो बाय दिस. द नॉर्थ वेस्ट लाइज बिटवीन द नॉर्थ एंड वेस्ट. अब नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, नॉर्थ एंड वेस्ट के बीच का जो डायरेक्शन है दैट इज सब डायरेक्शन एंड दैट इज कॉल्ड नॉर्थ वेस्ट. फाइन. द साउथ वेस्ट लाइज बिटवीन द साउथ एंड वेस्ट. अब साउथ और वेस्ट के बीच का डायरेक्शन है साउथ वेस्ट एंड द साउथ ईस्ट लाइज बिटवीन द साउथ एंड ईस्ट. साउथ और ईस्ट के बीच का जो डायरेक्शन है वो है साउथ ईस्ट. सो अंडरस्टूड चिल्ड्रन? बहुत अच्छे से आया समझ में? डायरेक्शंस कितने? मेन डायरेक्शंस नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट. देन द सब डायरेक्शंस, जो मेन टू डायरेक्शंस के बीच का जो डायरेक्शन होता है वो होता है सब डायरेक्शन एंड दैट आर आल्सो 4. ओके. नाउ कलर्स इन मैप्स. पहला तो हमने डायरेक्शंस कर लिया. नाउ वी कम टू द कलर्स. In the maps, different colors are used to show different places. एक मैप में अलग अलग जगह को शो करने के लिए अलग अलग कलर्स का यूज होता है. फाइन. See, colors and places. So what are these colors and what are the places? Blue. अभी जो ब्लू कलर से जितनी भी चीजें दिखाई जाती हैं वो क्या होती हैं? Those are water bodies like oceans, seas, rivers, lakes. जितनी भी वाटर बॉडीज को शो किया जाएगा वो सब ब्लू कलर से शो किया जाता है. Look here. See, all the water bodies. Bay of Bengal is here and then Arabian Sea is here. ये सब वाटर बॉडीज हैं. जितना भी ब्लू पार्ट है सब वाटर बॉडीज. Now with green, green मतलब प्लेन्स है वहाँ. That is the plains. ये जितना भी ग्रीन पार्ट है ये सब प्लेन्स हैं हमारे. Fine. Now yellow. Yellow are the highlands. ये सब highlands हैं. All yellow part. Fine. Dark brown. अब dark brown से जो शो किया जाता है वो होता है mountains and hills. ये देखिए ये सब dark brown से है. These are all mountains and hills. And the last one is white. White, snow. Snow दिखाने के लिए white color use होता है. Now see here. Look here. All these white parts are the snow covered areas. Fine. So this is, in this way the colors are used in a map. आया समझ में? डायरेक्शंस पढ़ा पहले हमने. डायरेक्शंस कैसे दिखाए जाते हैं मैप में और कलर्स कैसे शो करते हैं मैप. Now we come to the keys and symbols. The objects on a map are shown using symbols and colors. कोई भी ऑब्जेक्ट शो करने के लिए या तो सिंबल्स का यूज किया जाता है और कलर्स का यूज किया जाता है. A symbol is a picture on the map that stands for something in the real world. एक सिंबल क्या होता है? एक पिक्चर होता है मैप में जो कि कुछ रियल वर्ल्ड में जो चीज है वो शो करता है. To explain what these symbols means, map uses a key. अब ये सिंबल का मतलब क्या है इसके लिए एक की यूज किया जाता है मैप में. The key shows the meaning of each of the symbol. हर एक सिंबल का मीनिंग क्या है वो की शो करता है. They usually do this by showing a small picture of each of the symbols and colors used on the map.
along with the written description of the meaning of each of them. इसमें written description भी होता है. देखिए, a map contains a key to show what each symbol stands for. We'll just read this. Wait. Some symbols are international and are understood all over the world. कुछ symbols तो international होते हैं जो कि all over the world सब लोग समझ पाते हैं. The key here shows some of the symbols used worldwide. Now look here. Boundary. अगर boundary दिखाना है तो international boundary is shown like this. Fine? This is the symbol to show an international boundary. Okay? Then this is used for state. ये show होता है district and this is village. Okay? Now roads. अब roads कैसे अलग अलग तरह के roads होते हैं. Metalled, then unmetalled, narrow way, footpath. These are all the symbols used for this. Okay? So key भी साथ में दिया है. Railways. अब railways में broad gauge कहाँ use होता है, meter gauge कहाँ use होता है, narrow gauge कहाँ use होता है, and railway station. This symbol is used for railway station. कि इस जगह पे यहाँ पे railway station. Now water source. This symbol is for river. This symbol is for pond. Then here this is shown as river, again bridge. Then unlined well, done well. Then including water tanks, dry ponds. हर चीज के लिए एक symbol का use किया गया. Now others, what are the other things? For national capital, this symbol is used. State capital, a single round. Then tehsil, a smaller round. After that, town का ये symbol है. Village का ये symbol है. Fort is shown by this symbol. Dam by this symbol. Temple ऐसा बना होता है. Mosque, this church, and this is Gurdwara. Fine, children? So in this way, the keys and symbols are used. Now scale. The fourth thing is scale of a map. Map is much smaller than the area shown by it. एक एरिया जो शो करता है मैप, वो मैप तो छोटा होता है, but the area is much bigger. So a scale has to be used to draw a map. एक मैप ड्रॉ करने के लिए एक स्केल यूज किया जाता है. A scale shows a unit measure which is equal to a much bigger unit. एक यूनिट मेजर शो करता है स्केल, वो जो कि एक ज्यादा बड़े यूनिट को दिखाता है. Take an example. The scale of a map is 1 centimeter is equal to 100 kilometers. मैप का जो 1 सेंटीमीटर है वो रियलिटी में 100 kilometers होता है. On the map, the distance between two places A and B is 4 centimeters. Now look here, very carefully listen to me. अगर किसी मैप में distance between A and B, एक जगह से दूसरी जगह का distance 4 centimeters है, then they are 400 kilometers away from each other. In reality, वो कितने kilometers away है? A B से कितने दूर है? 400 kilometers, because 1 centimeters is equal to 100 kilometers. So 4 centimeters equal to 4 into 100 comes to 400 kilometers. Fine, children? क्योंकि 400 kilometers हम मैप पे नहीं दिखा सकते हैं. So just we have put a scale here that 1 centimeter is equal to 100 kilometers. Fine? A scale is always given in a corner of the map. मैप के बिल्कुल कॉर्नर पे ये स्केल मेंशन्ड होता है. Fine? Understood? Very nicely. So this was all about your neighborhood, mapping your neighborhood, how to map the neighborhood. So now children, testing time. Here we start. What is drawing to scale? What is drawing to scale? A map is a drawing to scale. A map is a drawing to scale. Which are the 4 main and 4 sub-directions? The 4 main directions are north, south, east and west.
And what are the 4 sub-directions? Northeast, northwest, then southeast and southwest. Fine? Where can we get a city road map? We can get a city road map on railway stations, bus stand, and bookshop. Okay? Now, take the correct answers. A drawing of a place is called a sketch globe map. A drawing of a place is called a map. To represent a landmark on a sketch, we use a symbol, key और scale. एक लैंडमार्क को रिप्रेजेंट करने के लिए, अगर हमें किसी स्केच पे एक लैंडमार्क को रिप्रेजेंट करना है, तो what do we use? We use a symbol. Yellow color in a map represents mountains, plains or highlands. Yellow color represents highlands. Now fill in the blanks. Here we have to fill in the blanks with the correct words. The area around our house is our, हमारे घर के चारों तरफ जो एरिया है उसे हम क्या कहते हैं? What is it called? It is called neighborhood. It is known as Neighbourhood. Neighborhood. Fine. So now children, a map is a dash of a neighborhood, a city or a country. एक मैप क्या होता है? Neighborhood, city या country का drawing. A map is a drawing of neighborhood, city or country. The subdirection dash lies between west and north. North और west के बीच का जो subdirection है उसे कहते हैं north west. Okay? It is a northwest direction. We can also see a dash displayed at the entrance. कॉलोनी के entrance में क्या होता है? एक colony map. It is displayed at the entrance. Dash maps show the shape of the land. कौन सा map land का shape show करता है? It is the relief map. R-E-L-I-E-F. Relief maps. A dash is a picture on the map that stands for something in the real world. A symbol. A symbol, एक जो symbol होता है वो show करता है किसी चीज को जो कि real world में है. So now we come to the true and false, children. Write T for true and F for false. Political maps show changes in climate. No, this is false. Keys are useless in studying a map. This is false. Keys are very useful in studying a map. So we write F here. There are 8 main directions. Are there 8 main directions? अभी हमने पढ़ा कितने directions है main? There are 4 main directions. So this is also false. A scale is always given in a corner of a map. Yes, this is true. The explanation of symbols is called an atlas. No, this is false. Now children, here we start with the matching. Match the correct answers. एक साइड पे आपको मैप्स के नेम्स दिए हुए हैं और दूसरी साइड पे दिया है कि उन मैप्स में क्या क्या मिलता है हमें. So let's start. Relief map. Relief map, shape of land. It tells the shape of a land. So we match relief map to shape of land. Picture map. As the name says, picture. Pictures. Thematic map. Thematic maps, they show the facts of regions. Then weather map, weather. And political maps, they show the countries.
Okay? Now name the following people living near our house. हमारे घर के आसपास जो लोग रहते हैं वो कौन होते हैं? वो होते हैं neighbors. They are our neighbors. Signs representing landmarks on a map. They are the symbols. They are known as the symbols. The area around our house, हमारे घर के आसपास का area, वो क्या कहलाता है? It is known as the neighborhood. It's known as the neighborhood. A map which shows countries and their capitals is a political map. But a political map shows the countries and its political. Sorry. Oh my. Let's write it again. So this was signs for symbols, and the area around our house is, what is it? Neighborhood. The area around our house is neighborhood. And the last one is a map which shows countries and their capitals. That is a political map. Political map. Fine? Now, what's next? Answer the following questions. How do drivers, bikers, and sailors find their way? The drivers, bikers, and sailors, they find their way to their destination by looking at the map, by following the road map. They follow the road map. Now, children, next is, what is a map? What are different types of maps? A map is a drawing of different countries, city, and its capital. And what are the different types of maps? The different types of maps are relief map, thematic map, picture map, weather map. You have just read it now. Relief map, picture map, political map, thematic map, weather map. What is meant by the scale of a map? A map is much smaller than the area shown in it. Okay, so to mention it, a scale is being used, and scale is the unit of that map. That measurement is the measurement unit of that distance. So children, why do maps use symbols? The objects on a map are shown by using symbols, and the symbols are the objects, are the things which are there in the real world. That's why the maps use symbols. Now, how are maps useful to us? The maps are useful to us in many ways, as the maps show, the road maps guides the driver or the sailor as to where to go, to which destination they have to reach. They use the road maps there. Then the thematic maps are also useful. The political maps show the countries, their capitals, and the scale which is used in a map, that covers the large area which is shown in a very smaller way in the map. So maps are very useful to us in many different ways. And how is a key in the map useful? The key shows the meaning of each of the symbol which is used in the map. That's why the key is very useful in the map. And now activity. On a political map of India, locate your state and its capital. As you have read, आपने अभी पढ़ा कि political map में क्या show करते हैं? Country, its capital is being shown. So take a political map of India. You'll get it from the bookshop, and on that, locate your state, in which state you live, and its capital. Make a sketch of your colony and mark the major features located in it with the help of symbols. अब अपनी कॉलोनी का एक स्केच बनाइए और
मेजर फीचर्स क्या क्या है आपकी कॉलोनी में, उसको सिंबल्स के थ्रू, विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स, जस्ट मार्क देम. Then the last one, make a sketch of your room. Mark all the doors, windows, and even furniture if you want. Now, the room in which you live, just make a sketch of that and then mark all the doors and windows, whatever, how many doors are there, how many windows are there, what is the furniture which is kept in your room. Just mark all those things. Okay, children? And I hope you all have very well understood this chapter of maps, how maps are used, what are the different kinds of maps, क्या क्या होते हैं और ये maps किस तरह से यूज़ किए जाते हैं, इसमें symbols कैसे यूज़ होते हैं, how the keys are used, how the scale is used. So this was all in this chapter. Stay excited for the clamp of another video. I'll be back with a new chapter for you. Till then, stay happy, stay blessed and keep learning. Bye.